So hello everyone, welcome back to my channel. I am Shivam and this is my third video of the interview series, and if you have not watched the other two videos you can watch. And in this video I will be sharing my interview experience of IISc Bangalore at 4 different departments that I gave last year in the month of May and December. And the May month is for the regular PhD admissions for August semester, and the December month is for mid-year admission cycle. So I gave interviews for both the cycles. So if you are coming from a physics background, you should definitely watch this video till the end. You will get the insights of all the 4 departments and how are the questions asked in the interviews. So without wasting any time, let's get started. So as I told that I gave interviews at 4 different departments at IISc Bangalore for my PhD admission. These were the departments I gave interviews. The first 3 I gave in the regular cycle for the August session. The last 3 I gave in December session, that is the mid-year cycle admissions. Okay, so one by one I will go through each of the interviews that I gave in these departments, and I guess this will be a longer video than the other 2. I'll try to answer most of the questions in this video, but if not, you can let me know in the comments. So शुरू करते हैं physics से. So if you are called for physics department interview, they will give you 2 options to choose from. You can choose any of them or both of them. So these are experimental condensed matter and theoretical condensed matter. So my turn came after lunch. So there were 5-6 professors inside the panel. Normally hota hai. So the first question they asked was introduce yourself. So I gave my introduction, my bachelor's, master's, projects and research interest. Okay, they will ask you. Then the second question was what are the experiments you did in your master's. So this was the second question. And they started the interview with this question. So I don't know what happened क्योंकि last semester में हम लोग कोई experiment करा गया था for probe. So this experiment just came out of my mouth. So I explained them the 4 probe measurement technique to measure the resistance of any semiconductor material. So before proceeding to the next questions, let me explain the 4 probe measurement technique so that you can a bit of understand what type of question they ask after you explain the experiment. Okay. The 4 probe is nothing but an experiment to measure the resistance, or you can say the resistivity of any material. And so we can measure resistance by 2 probes. Okay, why using 4 probes? So if you have a material and you can pass current, okay, through a constant current source, and you can connect the voltmeters in series with that, and you can measure the voltage. And if you find voltage and current, so you can find the resistance, okay, the slope of IV curve. So why do we use 4 probe? And this is the main question they will ask, why do we use 4 probe instead of 2 probe? Because we can measure the resistance using just 2 probe. Just touch the probe to the material and just measure I and V. So first let me explain the 4 probe measurement technique. So in this, just we use a different voltmeter or 2 extra probes for measuring the voltage. तो मैंने explain किया पहले तो 4 probe measurement technique and how it works. Then the question comes, why you use 4 probe and not 2 probe? So the answer lies in the contact resistance. So if you use 2 probe, the current flows like this. Okay. So here at the contact, this material has some contact resistance due to the probe touching the material. तो होगा क्या कि इस contact resistance की वजह से अगर मेरा material का resistance, let's say if my material resistance is comparable to the contact resistance, okay, then I will not get the accurate resistance of the material. Let's say your material resistance is 4 ohm and your contact resistance is also 3 or 3.5 ohm comparable, then you will get the total resistance as 7 ohm, which is not correct. तो इस मेथड का यही डिमेरिट है कि अगर आपका रेजिस्टेंस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कंपेरेबल है तो ये आपको रॉन्ग मेजरमेंट देगा. एंड हाउ डू वी ओवरकम दिस, हाउ डू वी एलिमिनेट द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस? बाय यूजिंग 4 प्रोब्स. 4 प्रोब में क्या होगा कि आप करंट तो पास करेंगे, ओके, थ्रू द आउटर प्रोब्स, बट यू विल मेजर द वोल्टेज not from the same probe but with 2 different probes having voltmeter. And we know that voltmeter offer infinite impedance to current, so no current can pass through these 2 probes. And if no current passes, then no contact resistance here because current is not passing through these 2 probes.
Here the current was passing here and the charges were accumulating here. So when the charges accumulate, they offer resistance to the current. But here no current is flowing, so no accumulation of charges, and then you have no contact resistance. तो इस तरह से 4 probe eliminate करता है contact resistance को, and we can measure the more accurate resistance of the material. Then they will ask the technical questions. What quantities did you measure? Well, how you perform the experiment basically. Then I told resistance and resistivity, and then the band gap also. Then they asked, how did you measure the band gap? So I told them this relation, okay, that rho is proportional to exponential Eg by 2 kT. This comes from semiconductor physics. So if you know the resistance, and if you know the resistance at different temperatures, you can know the band gap. Basically, you can take the log on both sides. So I told them this is the relation, and we can measure the resistivity of the material using the same technique, but we can put that material in an oven and we can heat the material and increase the temperature, and we can plot a graph of 1 by Tn resistance or resistivity, and this slope will be Eg by 2k, which is Boltzmann constant. So from this slope you can find the band gap of the material very easily. Then they asked how the graph looks like for the n-type semiconductor. So you can draw the graph for n-type semiconductor. Rho versus T you can plot, or rho versus 1 by T. It will look like this. If you increase the temperature, the resistivity will go down. Then they asked, okay, forget temperature. If you increase the pressure on the material, okay, how will rho change? So I thought, and I told them that if we increase the pressure on the material, the potential, the atomic potential will change, electron will come closer, the atom will come closer. So I told them something like resistivity will decrease or increase. I don't remember what did I say, and I also don't know that was correct or not. So I could not answer this. This was the last question, and then they told, okay, you can go. But at last, when I was just about to go, एक प्रोफेसर ने एक piece of paper दिया and asked to guess the thickness of the paper. He just hinted that you can fold the paper, you can think of something. So I folded up the paper. ठीक है, 7 से 8 बार तो नहीं हो पाएगा, 5 से 6 बार फोल्ड किया मैंने पेपर. एंड फोल्ड करने के बाद you can guess the thickness of the paper, and you can divide the thickness by the number of folds you did. Okay, so मैंने guess किया 500 microns, and then they told, okay, you can go now. So these were the questions they asked in physics department interview in experimental condensed matter panel. And now we will go to next panel. So I was not prepared for the theoretical condensed matter interview, and I was not going to give the interview. But then I had time because next interview was scheduled the next day. So मेरे पास time था, तो हम सोचे कि let's give the theoretical condensed matter interview too. So I told them that I also want to give interview in theoretical condensed matter panel. So they allowed, okay, you can give, but you have to wait, let everyone finish and then you can give. So let's go to that. Again, same thing. They asked me to tell me about myself, the introduction and all. And then this happens in mostly all the theoretical panels interview, that they will ask you your favorite subjects or what are the topics you have prepared. So I told them quantum mechanics, electromagnetic theory and solid state physics. So the first question they asked was from EMT. So they asked that, do you know about curl and divergence? So I told them yes. And then they told, draw vectors whose divergence and curl are non-zero. So I was drawing something like this, like whose divergence is not zero. And for curl I was confused, like how should I draw, like I was drawing something wrong. So फिर मैम ने hint किया कि how should a function look like if its curl is non-zero. So this is the formula for finding the curl of a function, and if the curl is non-zero, so the determinant of this thing should be non-zero. So what should be f1, f2 and f3, that the determinant should be non-zero. So you can find the form of the function. Let's say yx cap plus x y cap plus some xyz cap, like that, and the determinant will be non-zero. Then you have to plot this function. So I tried plotting this type of functions, but I was not correct, I guess. So they moved to the next question, and this was the only question they asked from EMT. Then they moved to quantum mechanics. Okay, the next professor asked, what is the commutation of x and p? So I told them IH cut. So they asked me, can you derive it? So I derived it on the board by choosing some wave function and operating the xpx operator
It took me also 5 minutes, more than 5 minutes, I guess. Okay, so I think one more question they asked from quantum mechanics, but I could not answer. They asked some general relation of Heisenberg uncertainty principle. तो हमको वो याद ही नहीं था, तो हम वो बता नहीं पाए. Then they moved to classical mechanics, और जिस सब्जेक्ट को मैंने चूज भी नहीं किया था कि that I have prepared this, so there is a definite probability that they will ask a subject or a topic that you have also not prepared, so be ready for that also. तो पहले उन्होंने पूछा कि can we ask question from classical mechanics, so I told them yes. उसके बाद उन्होंने एक सिचुएशन दिया कि there is a spherical ball or shell, I did not remember the exact question, and there is a ball and it fell from that top position of the ball. Okay, the radius of the ball is r. So what is the acceleration as it leaves the surface? Okay, यहाँ से जब ये बॉल गिरेगा तो ये बॉल सरफेस को छोड़ेगा, तो what is the acceleration when it leaves the surface? But I could not do it on the board in front of them. फिर उन्होंने पूछा इसका Lagrangian बता, like लिख सकते हो या नहीं. So I tried something writing Lagrangian and all, but it was not correct, I know. So this was the last question. Find the acceleration of this ball when it leaves the surface and then write the Lagrangian for the system. And because it was too late, I was the last person to get interviewed in the theoretical condensed matter panel, and I guess they have already interviewed that much people that they can choose from. Only 4 क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, तो ये भी लगभग 20 मिनट्स चला. The experimental condensed matter physics interview, that was also 20 to 25 minutes, like that, 20 to 25 minutes. So maximum 30 minutes they will give you for any interview. In rare cases they can go to 45 minutes, and some interview can go to 1 hour, but it's very rare. So maximum is 45 minutes, but on average 30 minutes, max to max per person 30 minutes. क्योंकि मेरा इंटरव्यू 20 मिनट से ज़्यादा चला नहीं, तो हमको पता था कि इंटरव्यू अच्छा नहीं गया फिजिक्स डिपार्टमेंट में, ऑफर लेटर नहीं आने वाला पीएचडी के लिए. इस टाइम पे मैं बता रहा हूँ अच्छे से शायद आपको कि ऐसा होगा आंसर, ऐसा होगा ग्राफ, ये बताना है, बट उस टाइम पे हम नहीं बता पाया था आंसर अच्छे से. So interview was not that much good, and I also did not have that much confidence कि मेरा हो जाएगा selection. So I gave up. So on that day only I gave physics department interview in experimental condensed matter and theoretical condensed matter. Then I went back. Okay. Next day I had interview in CeNSE and IAP. So let's discuss about CeNSE department. So the next day I went to CeNSE department for the interview, और वहाँ पे जाकर पता चला कि वहाँ पे 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होंगे. तो सारे बच्चे वहाँ पे जो आए थे उनको बैठा के अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया गया, सेंस में क्या क्या रिसर्च हो रहा है उसका एक मूवी दिखाया गया, लाइक शॉर्ट क्लिप. एंड देन वी हैड टू वेट, और एक प्रोफेसर आए, उन्होंने बताया कि यू विल हैव टू गिव 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू. फर्स्ट यू विल क्लियर द फर्स्ट राउंड, देन देयर विल बी अ सेकंड राउंड, एंड आफ्टर क्लियरिंग बोथ द राउंड्स यू विल गेट सिलेक्टेड. ये सुनकर तो पहले ही बैंड बज गया कि 2 राउंड होंगे, हर जगह 1 राउंड होता है इंटरव्यू का. वहाँ पे भी 3-4 पैनल्स थे इंटरव्यू के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने, और हर पैनल में 3-4 प्रोफेसर्स थे. So I was allotted panel 5. So the first question they asked was, how did you know about CeNSE and why it is your first preference? Because when I applied in IISc for PhD admissions, and they will ask you 3 preferences to give, and on the basis of that preference you will get interview call letter and you will get selected. तो मैंने first preference CeNSE को रखा था, second physics and third IAP. So I answered this question. तो हमने बताया कि I know about CeNSE due to my teachers and seniors who are already there, who are already here doing PhD. And the second point I told them was I have done my master's project in triboelectric nanogenerator, and so I am interested in the work that is happening in CeNSE. So they asked, explain your project. So I went on board and explained my project about triboelectric nanogenerator, whatever I did in my master's thesis. Then they asked all the questions from my project. Okay, how the charges are getting transferred from one layer to another layer. Then for a metal and semiconductor contact, how electrons will transfer. So if you have a metal here, then here semiconductor, we have a Fermi level of this, we have Fermi level of this can be lower or higher. Then there is a vacuum level, work function. So how the electron will transfer from here to here or here to here. So I explained them, not very correctly. So then they moved to semiconductor physics, band theory and all. So they asked how the Fermi level shifts if we have a metal semiconductor contact or a semiconductor and semiconductor contact n-type p-type, how the Fermi level shifts, then how the charge transferred in this semiconductor. So I was explaining them whatever I knew at that time. उस हिसाब से I answered the question. Then they told me to draw the energy band diagram for the p-n junction under equilibrium conditions. So I drew the energy band diagram. उन्होंने बोला फर्मी लेवल शो करो, बिल्ट इन पोटेंशियल कहाँ पे होगा, क्यों होगा बिल्ट इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स किधर से फ्लो करेंगे. तो देन दे आस्क, if he buys this p-n junction,
how the electron will flow and how the hole will flow and how will the energy band diagram will change. Okay, तो उसके लिए आपका फर्मी लेवल ऊपर नीचे शिफ्ट होगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड वाज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल फ्लो अंडर बाइसिंग. अगर हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं एंड रिवर्स बाइस करते हैं तो एनर्जी बैंड डायग्राम एक तो कैसा शिफ्ट होगा या फिर चेंज होगा, फर्मी लेवल कैसे चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स किधर मूव करेंगे, बिल्ट इन पोटेंशियल कैसे कम होगा या ज़्यादा होगा, वो आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाना है. तो वो बताया. देन दे टोल्ड ड्रॉ द IV कर्व फॉर दिस इन बोथ द बाइसिंग कंडीशन. एंड देन लास्ट में ही वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं. जब तक आप आंसर कर रहे हो ओके, फिर आंसर करते करते कैसा टाइम आएगा कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि वो आपको बुक पे नहीं मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको चैट जीपीटी पे नहीं मिलेगा. वो एक रिसर्च टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन जो उन्होंने उस टाइम पे सोचा हो, ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा. सो दे गैव मी अ सिचुएशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दे टोल्ड एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस. ये फर्स्ट राउंड का लास्ट क्वेश्चन था, अभी फर्स्ट राउंड ही चल रहा है. ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन वाज लेट्स से यू ब्रेक द कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑफ द डोपेन एटम्स. अगर एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर है एंड वी फॉर्म द पीएन जंक्शन, और अगर वी ब्रेक द कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑफ एन टाइप और पी टाइप, लेट्स से एन टाइप, we break the covalent bond. Let's say the dopant is phosphorus and we break the covalent bond of phosphorus and silicon everywhere in the n-type. I told this is not possible, sir. How can we break the bonds? So he told just assume that we are applying an external field or something like that, or temperature or something, and we are breaking the bond. So after this happens, draw the IV curve for this situation in both forward bias and reverse bias. So I was thinking, but I could not draw because I could not think कि situation कैसा होगा. I didn't know. और गेस भी नहीं कर पाए उस टाइम पे. सो दे टोल्ड ओके यू आर क्वालिफाइड फॉर द सेकंड राउंड, बट दे ऑल्सो टोल्ड दैट कि कम इन द सेकंड राउंड विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रेडी. सो ट्राई टू फाइंड आउट एंड लंच के बाद हम लोग मिलेंगे. लंच के बाद सेकंड राउंड होगा और तब तक इसका आंसर ढूंढ के रखना. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. और उसके बाद मैं निकल गया बाहर. सो आई वेंट आउट. उसके बाद हम मोबाइल में सर्च करने लगे कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे मिलेगा. कहीं में आंसर मिला नहीं कि ग्राफ कैसा दिखेगा. सो आई वेंट आउटसाइड. आई वाज सो हैप्पी. मतलब थोड़े खुश भी थे हम कि फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, बट टेंशन उससे ज़्यादा था कि सेकंड राउंड में वही क्वेश्चन पूछेंगे. वो बता चुके हैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, और उसका आंसर नहीं रहा तो बहुत दिक्कत होगा फिर. तो उस आंसर को ढूंढने के लिए हम लग गए. ठीक है, नेट पे ढूंढा मैंने, नहीं मिला. फिर मैंने सोचा सीनियर से पूछता हूँ. नहीं कॉल आ रहे हैं भैया. सो उन्होंने थोड़ा कुछ बताया कि ऐसा बोल सकते हो आंसर, और वो खुश हो जाएंगे शायद इस आंसर से, तो तुम्हें ऐसा बताना है. सो द आंसर वॉज लाइक कि वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा एंड स्ट्रेट लाइन दिखाएगा IV कर्व में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो है जो चार्ज रेडियस, उनसे बहुत ज़्यादा करंट होगा जब डोपेंट मूव करेंगे. ओके, तो इट विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन. ऐसा मैंने सोचा था कि यही आंसर करना है. तो सेकंड राउंड हुआ 1-2 घंटे बाद. सेकंड राउंड में सारे प्रोफेसर बैठे होंगे. मतलब फर्स्ट राउंड में 5 पैनल था, 5 पैनल में 3 प्रोफेसर्स थे हर पैनल में, तो टोटल 12 to 15 प्रोफेसर्स वेर देयर. सेकंड राउंड में सारे प्रोफेसर राउंड टेबल पे बैठे होंगे, 12 to 15 प्रोफेसर्स. उस टाइम में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. मतलब नेचुरल सा बात है, इतने लोग बैठे हुए हैं, 12 to 15 प्रोफेसर्स, नॉट ओनली 3-4. फिर भी चलो इंटरव्यू तो देना था सेकंड राउंड. जो उस पैनल में थे जिन्होंने बोला था कि इसका आंसर ढूंढ के रखना, उसके बाद उन्होंने पूछा डिड यू गेट द आंसर. आई ट्राइड ऑन द बोर्ड. मैंने बताने का ट्राई किया ऐसा होगा, बट शायद उन्होंने सुना नहीं ठीक से और हम भी ठीक से शायद समझा नहीं पाए. देन सम अदर प्रोफेसर आस्क्ड ओके ड्रॉ द फर्स्ट ड्रॉ द IV कर्व इन नॉर्मल कंडीशन. देन अगेन आई ड्रॉ द नॉर्मल कर्व. ओके, लाइक दिस. उसके बाद अगेन दे टोल्ड टू ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पीएन जंक्शन एंड ऑल, जो कि प्रीवियस पैनल में हो चुका था सारा डिस्कशंस. उसके बाद फिर से ड्रॉ करवाया ताकि सारे लोग प्रोफेसर देख सके कि मैं क्या बता रहा हूँ. उसके बाद दे टोल्ड टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज ऑन सेम ग्राफ. जो मैंने लेट्स से कहाँ गया वो, हाँ यहाँ पे जो बनाया था ये, यहाँ पे ही उन्होंने बोला कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ. जो बिल्ट इन वोल्टेज है हमारा यहाँ पे, वो बिल्ट इन वोल्टेज कैसा होगा. तो E वर्सेज X एंड V वर्सेज X, ये बोला बनाने को. ठीक है. Then they asked what forces the charge carriers are getting to get move across the barrier. And I guess this was the last question for CeNSE department. First round जो था, बताता हूँ, first round जो था that was about 20 to 25 minutes about my project and then semiconductor device physics and band theory and all. जो second round था वो शायद 10 minutes चला होगा, उससे ज़्यादा नहीं. पहला राउंड अच्छा गया था. I tried to give all the answers, but कुछ वही लास्ट क्वेश्चन में अटक गया क्योंकि हमको आता नहीं था वो. बट आई फील्ड कि सेकंड राउंड उतना अच्छा नहीं गया. बाय सीइंग देयर फेसेस, वो शायद उतने सेटिस्फाइड नहीं थे मेरे आंसर्स थे. एंड देन जल्दी भी खत्म हो गया सेकंड राउंड, तो सेटिस्फाइड नहीं थे कि अच्छा गया इंटरव्यू. लास्ट में तो सारा खराब ही हो गया शायद. फर्स्ट राउंड अच्छा गया बट सेकंड राउंड अच्छा नहीं गया, तो सिलेक्शन क्यों होगा. सो उसी दिन आफ्टरनून सेशन में, मतलब लंच के बाद, IIP डिपार्टमेंट में मेरा इंटरव्यू था. सो लेट्स सी वहाँ पे क्या हुआ. सो IIP डिपार्टमेंट में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे अगर आप आते हैं यहाँ पे इंटरव्यू देने. तो एक तो वहाँ पे IIP डिपार्टमेंट का इंटरव्यू होगा, फिर एक CCT का होगा, सेंटर फॉर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी. तो क्योंकि अब ऑप्शन था वहाँ पे देने का दोनों
सेंटर पे इंटरव्यू, तो मैंने ऑप्ट कर दिया दोनों के लिए कि IIP में भी दे सकते हैं और CCT में भी। सो IIP स्टार्ट हुआ, ठीक है। IIP में इंट्रोडक्शन दिया मैंने एंड देन दे मूव डायरेक्टली टू द इंटरेस्टेड टॉपिक्स। सो सेम टॉपिक आई टोल्ड, solid state physics, quantum mechanics and electrodynamics. So the first question they asked was how and why the bands are getting formed in semiconductor. So I tried explaining it with chronic penny model. The chronic penny model का वो जो ग्राफ आता है P sin alpha by alpha का, इधर अल्फा है। So I tried explaining the bands formation from this, but उनसे वो satisfy नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली क्रॉनिक पेनी मॉडल का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो एक इंट्यूटिव आंसर उनको चाहिए था कि क्यों हो रहा है बैंड्स फॉर्म मटेरियल्स में। फिर मैंने ट्राई किया देने का कि दो एटम्स पास आते हैं तो ऑर्बिटल्स बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसी तरह अगर मटेरियल्स में, सॉलिड्स में बहुत सारे एटम्स पास आते हैं तो जो एनर्जी लेवल्स है इंडिविजुअल एटम्स के वो स्प्लिट हो जाते हैं, फिर ओवरलैप होता है, उनके ओवरलैप से बैंड फॉर्मेशन होता है। लाइक दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन, बट वो लोग सेटिस्फाई नहीं हुआ उतने अच्छे से। देन देयर वाटर ब्रिलियंट जोन्स, ओके, बिकॉज मैंने यहाँ पे मार्क किया था पाई बाई ए एंड माइनस पाई बाई ए। अब वो क्वांटम मैकेनिक्स में चलेगा, ठीक है। दूसरे प्रोफेसर ने पूछा, तो ईच प्रोफेसर विल आस्क फ्रॉम अ डिफरेंट टॉपिक, ओके। और ही गेव मी अ वेव फंक्शन, अ रैंडम वेव फंक्शन, और ये C1 और C2 का वैल्यू मुझे याद नहीं है, उन्होंने कुछ वैल्यू दिया था 1/√2 और समथिंग लाइक दैट। सो द क्वेश्चन वाज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर एनर्जी। मतलब अगर ये A1 स्टेट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी A1 है तो वो तो ईजी था, ठीक है, mod C1 स्क्वायर के इक्वल होगा, तो वो हो गया। देन दे आस्क्ड हाउ डिड आई फाइंड इट, तो उनको वो भी बताया, ठीक है। देन दे गेव अ ग्राफ टू प्लॉट। दे टोल्ड देयर इज अ फंक्शन x स्क्वायर माइनस 3 बाई x प्लस 3, प्लॉट दिस ग्राफ। मैंने ट्राई किया प्लॉट करने का इसको, बट पहले क्या हुआ कि मैंने रूट ट्राई किया फाइंड करने का, तो इसका रूट यहाँ पे होगा, ठीक है, x इक्वल टू प्लस माइनस √3 पे होगा। बट मैंने गलती ये किया था कि x प्लस माइनस 3 ले लिया था आंसर करते टाइम, तो वो मेरा ग्राफ गलत हो गया था। ग्राफ गलत हो गया तो द प्रोफेसर आस्क्ड कि रीचेक योर कैलकुलेशन, यू आर डूइंग सम मिस्टेक, जस्ट चेक द कैलकुलेशन फर्स्ट, ओके, एंड देन ड्रॉ द ग्राफ। आई कुड नॉट फाइंड कि ये यहाँ पे गड़बड़ है √3 और 3 में, तो ग्राफ तो गलत हो गया, ठीक है, वो सिली मिस्टेक था, चलता है। बट उन्होंने दोबारा बोला चेक करने, चेक करो, बट मैं फाइंड नहीं कर पाया कि कहाँ पे गलती है। So this was the last question here also, and ये भी ज़्यादा नहीं चला, 15 to 20 minutes. Then I gave interview to CCT, Center for Cryogenic Technology. That was in the same department, IAP. So again the introduction and all. The first question they asked was what are the topics you are interested in. Then I told the same answer. And also they asked that do you wish to join this department if you were given the offer. So they asked me to explain any experiment so that I can measure the E by M ratio of an electron. So I told them Millikan's oil drop experiment because उस टाइम पे हमको ये याद आया एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट उतना अच्छे से याद नहीं था, बट BSc में मैंने पढ़ा था। So I explained them this experiment on the board कि कैसे होगा एक्सपेरिमेंट, ये क्या क्या apparatus होंगे, इलेक्ट्रॉन पे क्या क्या फोर्स लगेगा। The next question was from quantum mechanics. So write the wave function for symmetric and antisymmetric cases. So they told me to write the wave functions for an electron and for a boson. So they hinted me to write, and after getting hints I wrote some correct wave function. Then how do they differ, how do the wave function differ. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था उनका कि draw the graph of y equal to sin inverse x. So I was thinking कि कैसा होगा ग्राफ. Then they told me to draw the graph of sin x, कि पहले sin x का बनाओ and then draw the sin inverse x. तो मैंने sin x का ग्राफ बनाया नॉर्मल सा, ठीक है. Then they told to draw the sin inverse x. They hinted कि इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, like this is y, this is x. If you invert it, set the x to y and y to x, this will be like this, something like this. बट ऐसा ग्राफ सही नहीं है, अब वो बस हिंट देने के लिए बोल रहे थे, तो ग्राफ कुछ ऐसा देखना चाहिए, और ये पूरा नहीं जाएगा ऊपर तक क्योंकि डोमेन 1 से -1 होगा sin inverse x का. तो आई वॉज नॉट करेक्ट एट दैट टाइम, बट एट लास्ट आफ्टर गेटिंग सम हिंट्स फ्रॉम हिम आई ड्रू द ग्राफ एंड दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड. सो ये इंटरव्यू ही 15 से 20 मिनट चला, फ्रॉम 15 to 20 minutes अप्रॉक्स. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेंटर फॉर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इंटरव्यू, और यहाँ पे इंटरव्यू खत्म हो गया. So this was my last interview at IISc for the August semester PhD admission. और interview खत्म होने के बाद I went back to my university to give my final semester exams. I got offers from other IITs but not from IISc. So again I gave interview in December month for the mid-year cycle, and now we will talk about that interviews. Okay.